नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र विकास केंद्र के पहले Q&A सेशन में। आज हम लोग राष्ट्र विकास केंद्र के फील्ड रियलिटी के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एनजीओ का काम है वो 3 मंथ्स हो चुका है ओपनिंग हुए और हमारे बहुत सारे ग्रुप लीडर्स एंड वॉलंटियर्स जो हैं वो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उनको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी नई चीज़ें हम लोगों को पता चली है। तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोगों का जो आज सेशन होगा टोटली Q&A के ऊपर होगा, फील्ड रियलिटी के ऊपर होगा। तो सर मेरा जो पहला सवाल होगा, और हाँ मैं बोलना भूल गया था कि आज जितने भी हम लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे टोटली सर आपको इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंग्लिश सेशन हम लोगों का बहुत नहीं हो रहा है। हम लोग इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश हम लोगों के कस्टमर्स बोल रहा हूँ, व्यूअर्स हैं, उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप जितने भी आंसर्स हों आप सब इंग्लिश में जवाब दीजिए। ओके, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रूरल एरियाज में डिजिटल एजुकेशन को एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखी गई? धन्यवाद, नमस्कार. If I talking about different type of challenges in rural area, it is totally very important question you asked me in right now situations. When you start any NGOs work, so first of all we have to check out that what type of problems in ground level is going on. Then we have to find it out what type of solutions we have to provide to our that peoples, to our localize. That's the reason why if I talking about what type of problem we are faced, lots of problem we are faced. If I talking about the first points we are facing, lack of that Android mobiles, or lack of device laptops. People didn't have their accessibility, their laptops and mobile phones and internet also. People are not even able to recharge their mobile phones, internet access. So big problems are there. If you go to the in this era, if you have to be teach to our peoples, that without laptops, without mobile phones, without internet, you can't provide digital education. So that type of problems we are faced first. Second, it would be our trainer. So we are not able to provide our trainers. Those are digital literate persons. Those are there. They are already trained persons. We are not sending remote area to district to remote area people. It is very tough to send them. So we are already started. Those people are living in rural area. Those are literate guys, or those are there. We are trained them perfectly, and through these things we are try to through this trainer, whatever we taught them in online classes, and through these things we are try to send them. They are become a teacher, and that is very important to our side. And if I'm talking about problems, that is same problems. And the third is peoples are they're afraid to join with us, like that some sort of frauds things are happening in ground level, OTP share, that kind of stuff. If I click these things, then my account money will be erased. So lots of tough things are already ground is going on. That type of problems we are faced, by the way, but people are want to be excited to learn. So this is very important for our side. Yeah. ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली आपने जैसे बताया कि लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी का बहुत कमी है, बहुत लोगों के पास फ़ोन्स नहीं होते हैं, लैपटॉप्स नहीं होते या फिर इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं होते। तो जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि वुमेन्स एंड सीनियर सिटीजन को स्मार्टफोन चलाने में क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? If you look around, if I talking about age group people, so those are 15 years to 30 years age group, they are very happy to use AI and mobile phones and laptops. They are interested to do such kind of works. But if you go to the above 40 and between 60, they are not interesting because they are forget each and everything. We are facing huge tough to teach them because they have lack of device. That's the reason why they are not in we are not give them prioritizing. But when
our trainers teach them how to step by step guidance to this scroll in mobile phones, how to they works through these mobile phones and laptops, other kind of stuff, or digital, how to do such kind of things. Then they have faced problems, then after some time later they have suddenly forget. So yes, age group is very matter in these situations. Yes, women are very excited to learn, but age group is more important. 50 to 30 age group peoples are excited to learn, but age group peoples are keen to learn, but they are certain very tough to teach them. Yeah. ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि उन लोगों को टीच करना बहुत ही हार्ड हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को एक्चुअली डिजिटल एडुकेशन के बारे में या फिर डिजिटल टूल्स के बारे में पता ही नहीं होता है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी से रिलेटेड है कि जो लोग डिजिटल एडुकेशन से अनजान हैं, उन्हें सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है सर? If I'm talking about those that do not know, look, one thing, same way last 20 years, 30 years ago, when Sakrat Abhiyan was started in India, on that time also people are not interested to learning books and curriculum activity too. Same way, we are also be facing same challenging in right now situation. People do not know what is digital educations. People are thinking like if you are call through your mobile phones and if you watching videos or social media small videos, it means like a digital things are there. But they do not know how these things are harming them, so how these things, some sorts of video, they are expanding more than 7 hours, 6 to 7 hours, or 6 to 10 hours time. They are expanding on screen time in mobile phones, childs, and if you go and check it out, 5 years age to 50 years age guys are spending 6 to 10 hours time in mobile phone. It is very dangerous situations in our India, so that type of pattern we have to be changed. They do not know that what is digital education is, so it is very challenging for us, and let's see. And we are very we are happy, but we are gradually succeed in providing this type of things. ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली सबको पता ही है कि हम लोगों का जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे कि गांव विलेज एरियाज में जो भी हम लोग टीचिंग करवाते हैं डिजिटल एडुकेशन, वो हम लोगों का वीकली 2 to 3 days होता है। हम लोगों के वॉलंटियर्स एंड हम लोगों के लीडर्स वो लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कराने लोगों को, अपना नॉलेज शेयर करने। तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है कि डिजिटल एडुकेशन के टीचिंग सेशन के दौरान लोगों का बर्ताव या फिर रिएक्शन कैसा रहा? If I'm talking about in teaching sessions, whenever we were started teaching session in different type of blocks and district in Malda, so but when people want to be, when they are sitting in the classrooms, when they're we have started, first of all I already explained that we have started with group, that 10 people, 20 people groups, and each and every house, in any one house, those are want to be learn about digital education. So we have started their classes, but they are very keen to learn, they are very happy to learn, that they are interested to learn. So I think it is very challenging for our side, so that if government if access us, if government help us, then we are very happily enter and we are very successfully teach our audience, teach our peoples, nation guys, that's very important. And in this 21st century it is require, and then I think it would be a late. So rapidly change our I'm not talking about society, rapidly change all the world. So our nations, and as a Indian, I also thinking like our nation's people should be changed rapidly, how rapidly changing internet situations or AI technology era. So we are people, so we are try our Rashtra Vikas Kendra also we try to change it rapidly same way. ओके, थैंक यू सर। तो बेसिकली मेरा ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुका है डिजिटल एडुकेशन के बारे में। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अभी तो आप लोगों ने रूरल एरियाज में गए हैं, वहाँ पे बातचीत हुआ है लोगों के साथ, इंटरेक्ट बहुत अच्छे से हुआ है लोगों के साथ। तो अभी के समय में किस एज के ग्रुप ने डिजिटल एडुकेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है सर? मैंने पहले ही बोला, पहले सर इंग्लिश में, सर इंग्लिश में। Oh, sorry. If I'm talking about, I already explained that second question might be. So 10 to
30 years age group, 10 to 35 years age group, people are very excited to learn about digital educations and digital things and AI technology. And they are keen, and why they are very interesting, because they are using that learning in their educations. And some sort of people, those are age of 30, 35, so they are interesting to use that education in their business. So I'm very happy, and they are very excited to learn through our platforms. Yeah. ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ कि क्या रूरल एरियाज में लोग एआई टूल्स और न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या इसमें अभी भी कोई अवेयरनेस की ज़रूरत है? It's take lots of time to teach our rural people. If I'm talking about tier 1, tier 2, tier 3 cities, also people are very keen. Very tiny amount of people are knows about AI. It's very challenging for our side. So we want to give best education for our tier 2, tier 3 and rural area guys. Those are interesting to learning through our side, and we are interesting to provide them. And here we have huge challenging, because that do not know about AI and other kind of stuff. So it is more challenging for our side. So very short amount of people knows about AI and other kind of stuff. So people are interesting to join with us, and they are learning through our sessions, through our groups, through our classes. We are very happy to see. Yeah. ओके, थैंक यू सर। तो आपने जैसे बताया कि बहुत लोगों को पता नहीं है अभी भी एआई टूल्स के बारे में या फिर नए टेक्नोलॉजीज के बारे में। लोग धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये नया फेस है, नया चीज़ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा उन लोगों का। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि क्या रूरल एरियाज में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनफ रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग अवेलेबल है कि नहीं सर? Look one thing is, if I'm talking about trainer in rural area, it is tough to provide to trainer to the rural area. It is very it's not easy to provide trainer. If I'm talking about we are produce our trainer, let me tell you one thing. Those literate guys are those are 12th standard, those are graduations, graduate completes, those are MA pass, those are 10th standard guys. Those are there. Those are keen to learn. First of all, we have to train them. We have to teach them, and that type of persons will started to they become a teacher, and they are started to teach to the students. That's why we are doing such kind of things. We are not bringing that um, uh, any type of trainers from the outsiders, in a village. So we are have one normal plan that we have to produce our trainer in a local area, and that trainers will be teach their students. That type of system we have built. थैंक यू सर फॉर द आंसर। तो अभी जैसे हम लोगों का 3 ही महीना हुआ है, हम लोग अभी डिजिटल एजुकेशन सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं नए-नए चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत लोगों को आदत लगाने में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज़ 1-2 दिन में सीखी नहीं जाती है, धीरे-धीरे लोग प्रैक्टिस करते-करते ही परफेक्ट होते हैं। तो अभी के समय में क्या है कि बहुत लोगों को फिर भी आदत नहीं लगता है सर, कि बार-बार अपने वही पुराने समय के हिसाब से चलने लग जाते हैं। बहुत लोग मतलब यूज़ नहीं कर पाते हैं नई चीज़ें। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है सर, कि क्या ट्रेनिंग के बाद भी लोग डिजिटल डिवाइस को डेली वर्क्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो फिर पुराने आदत पर लौट आते हैं सर? Look, one thing, if I'm talking about age group, I already told first time, it's different type of age groups. People are affected in digital education. Those people are 10 to 35 years old. Those are there. They are interested to learn, and they are already using when they knows about such kind of new things, and they are using these tools in their education. Some people, students, those are using AI in their education. They are making notes there, whatever. That's very important things are there. People should get different type of questions to this AI. They are providing different sorts of that paragraphs, and through this paragraph they could generate different type of questions to these things. They are very interesting. We are teach them very effectively, and
If I'm talking about 10 years to 35 years people are, when we are teaching them, and they are use that tools, and they are using this type of step in their regular life. By the way, if I'm talking about age people, those are age of 40 45, or those are people who are 50 years old. I'm not talking about 40 45, they are also interesting to learn, but those are 50 above. They are not when our trainer teach them, after that they are not keep their minds, they are forgetting such kind of things. Yes, these are sort of challenging things are there, but this is one thing are there. But when people start becoming regular learning such kind of things, it is becoming easy. It is very normal things there. It is not have very tough things are there. People are becoming habituated on it. या मतलब हम लोग आशा करते हैं कि लोग Yeah, जल्दी yeah, yeah. सीख Practical, जाएंगे। practical. या थैंक यू सर। तो अभी जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम लोगों का अभी जस्ट बिगिनिंग स्टेज है, हम लोगों ने जस्ट नया नया स्टेप लेना शुरू किया है ताकि हम लोग रूरल एरियाज को डेवलप करा पाए, लोगों को नॉलेज शेयर कर पाए, और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो वो लोग सुविधा नहीं उठा पाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी वो सारी सुविधा उठा पाए। हम लोगों का जो देश तरक्की हो, साथ में वो लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ हो हम लोगों के साथ चलने का। तो सर अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि बिगिनिंग स्टेज है, तो आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन को और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं सर? Look, फ्यूचर one thing we are try to do that, try our best in rural area. I'm not talking about just rural area in Malda. I'm talking tier 2, tier 3 cities also. We are started to penetrate in different places, and through this podcast, I want to share. And those peoples, those districts want to join with us. Those peoples are excited to learning educations. Those are want to be digital educations. Want their own cities, and they could contact with us. Those people are want to start this mission in their state also. I'm not talking about West Bengal only, I'm talking about Bihar, UPs, Rajasthan, Madhya Pradesh, and South India also. I'm talking about them. Those people are interesting to started this mission in their state, and they could contact with us, they should contact with us, and then definitely our team will contact with them, and uh, very rapidly we will start this project in different type of state also. Yeah. या तो जैसे ही बेसिकली हम लोगों के सर ने बताया कि हम लोगों का काम जो है अभी यहाँ से शुरू हुआ है, और बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को भी अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों का वेबसाइट है राष्ट्रविकासकेंद्र.com, जहाँ पे आपको सारा डिटेलिंग कंप्लीटली मिल जाएगा और कंप्लीटली अपडेटेड रहता है हम लोगों का वेबसाइट। तो जरूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, बहुत ही जल्द हम लोग आप लोग बनेंगे हमारे फैमिली के पार्ट, और हम लोग मिलकर देश को जरूर तरक्की की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम आखिरी सवाल पूछते हैं सर, ये हम लोगों का लास्ट सवाल होगा आज के Q&A सेशन में। तो वीकली ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद रूरल पीपल्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है? It is rapidly changed. If I'm talking about their huge challenge, it is good for our side. Rashtra Vikas Kendra has a mission that when the people are started to learn about digital innovations and AI, and people are rapidly changing their mindset also. They are interested to learn educations, digitals, AIs, and we are also providing them certificate. And after that outcome based education, we are trying to say that before that also we are providing outcome based education, outcome based digital education we are providing in rural area in totally free of cost. And when we are giving them certificate, then they will be entering business. Okay, so I think they are rapidly grow, and through this our site, when they are learning digitals, computers, basic knowledge. I'm not talking about they are becoming far knowledgeable. They are a little bit knowledgeable. They are how to use social media in their business, how to use laptops in their business, how to use mobile phone on their business. So that type of basic knowledge we are trying to teach them in our classes. Then I think through this side they could get different type of knowledge from the worlds, and they become rapidly that persons could develop their society. That is our missions, and we are doing best way. And I hope through these platforms each and every people will be developed.
this is yeah this या बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को एकदम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी के समय में जैसे देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गांव के साइड में हो गए, गांव के साइड में छोड़िए, शहर साइड में बहुत भी एजेड पर्सन रहते हैं जिनको फोन चलाना नहीं आता है, जो बेसिकली आपका ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं फोन के द्वारा, सिर्फ कॉल कॉल आना कॉल जाना, बस उतना ही उन लोगों का मेन काम रहता है, ज्यादा कुछ यूज नहीं कर पाते हैं। लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि आप डिजिटल टूल्स के मतलब यूज करने के बाद आप कितना ही मतलब डेवलप्ड हो सकते हैं, करवा सकते हैं, या फिर उसमें इनकम सोर्स भी बहुत सारा है। आप कम से कम घर में बैठे हुए तो नहीं रहेंगे, आप कम से कम धीरे धीरे करके सबको साथ में लेके बढ़ सकते हैं। ना बिजनेस हब में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिजनेस हब में हम या। लोगों का ही हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग 1 महीना 1 साल के लिए तो नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं और समाज में एक यूनिटी, इसमें प्रोडक्शन हब के लिए हम लोग ये राष्ट्र विकास केंद्र स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी हमारे साथ जल्दी जुड़िए हमारे राष्ट्र विकास केंद्र के फ्यूचर प्लान में, जहाँ पे हम सब लोग मिलके राष्ट्र को विकास की ओर लेके चलेंगे, जहाँ पे हर कोई साथ में चलेगा, हर कोई साथ में डेवलप होगा। तो आज के लिए बस इतना ही सवाल हमारे Q&A सेशन में। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर।